Hello viewers, welcome to AAM Pakistani reaction channel and I am Akil. He is Hello Majid. yes. और ये हमारी तीसरी वीडियो है इस चैनल की। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है Why are countries fighting for Indian rupee? वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। अब इसको देखते हैं वीडियो को और फिर इस पे हम कमेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। India and Russia are scheduled to begin settling trade using the rupee rather than the dollar within the next week. Exporters anticipate that shipments to Russia will be settled in rupees. And the fact that India will no longer use the dollar to trade with Russia is a major development. India will trade with other nations using its own currency. In addition to Russia, the Indian rupee is quickly becoming a sought-after currency used for trade settlements by a variety of nations. Which nations are looking to trade with India using the rupee? Why are they looking to dump the dollar? And how will India benefit from more countries wanting to trade using the rupee? De-dollarization is a global effort to decouple international trade from the US dollar. Currently, global oil purchases and international trade settlements are conducted using the dollar, giving the US an iron grip on the global economy and financial systems, which many nations, including China and Russia. चाइना ने सोचा था पाकिस्तान के साथ जब सीपैक स्टार्ट किया था इन लोगों ने तो ये चाइनीज करेंसी में करने का सोच रहे थे। To take baby steps to decouple लेकिन इंडिया ने लीड ले ली है the इसमें। Indian rupee, for instance, is an example of reduction in dollar dependence. According to Reuters, bilateral trade between countries is dependent on the dollar. Tajikistan, Cuba, Luxembourg, and Sudan have begun discussing the use of the rupee for bilateral trade settlement with Luxembourg और सूडान भी इंडियन रुपी यूज करने का सोच रहे थे। by the Reserve Bank of India, the country's central bank. Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh are among the countries to which the RBI has already granted approval. Russia and Mauritius must open special rupee accounts in Indian banks, known as Vaistro accounts, in order to trade using the rupee. The Central Bank of India must authorize the establishment of such accounts. The RBI has thus far permitted banks to open 18 Vaistro accounts. 12 of these accounts are Russian. 5 to Sri Lanka and 1 to Mauritius will soon depart for Tajikistan. Cuba additionally, Luxembourg and Sudan are anticipated. Let me tell you, मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है गाइस। मतलब इंडियन करेंसी को एक इंटरनेशनल मार्केट में यूज कराना, इट्स अ बिग स्टेप। मतलब डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म। देखे ना, हमें लाले पड़े होते हैं कि शेयर और डॉलर रह गया आपका, हमारे एलसी नहीं खोल रहे होते पाकिस्तान के। अभी भी बंद है, इंपोर्ट्स बंद है जस्ट बिकॉज के डॉलर में ट्रेड हो रहा है और हमारे पास डॉलर की कमी है, शॉर्टफॉल है, इस वजह से सारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। डॉलर तो आपके धड़ाधड़ जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, मतलब डॉलर की वजह से ही डिस्टर्बेंस है सारी। अगर डॉलर पे डिपेंडेंस खत्म हो जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ से कहाँ जाएगी। तो हम तब करेंगे ना जब हमारा रुपया तगड़ा हो। यस, इट्स अ बिग स्टेप। To establish their own accounts, which will facilitate the swift settlement of trade transactions using rupees. That's not all. Important West Asian actors such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates are also in discussions with India to use the rupee and their own currencies for bilateral trade transactions. The central banks of India and the United Arab Emirates are developing a potential rupee dirham trade mechanism. Meanwhile, Saudi Arabia and India are negotiating a rupee real trade mechanism. Saudi Arabia and UAE are also exploring ways to invest Indian rupees they earn from trade transactions back into India. Since these countries export more to India than they import from India, the extra rupees they earn from trade with India must be spent somewhere. India has proposed that such rupee holdings be invested in its government securities. Now, why is it important to use the rupee for bilateral trade with these nations? Let's consider the United Arab Emirates, India's third largest trading partner in 2020, after the United States and China. With a bilateral trade volume of $43.3 billion, who comes next after the United States, China, and the United Arab Emirates in the last financial year? Saudi Arabia was India's fourth largest trading partner, with a trade volume of approximately $42.8 billion. Russia, a heavily sanctioned country,
is urgently seeking alternative suppliers of goods and has recently requested a long list of items from India, including automobile and aircraft parts, यार ऑटोमोबाइल textiles, और and Textile हो गई है। pharmaceutical drugs. अच्छा, India textile। has much to gain by exporting these goods to Russia, and by using its own currency for these transactions, the rupee's value will be bolstered. रुपये की वैल्यू Using ऊपर the जाएगी ऊपर rupee for जाएगी यार। international डॉलर transactions पे will डिपेंडेंस also कम help होगी। stem the जैसे flow जैसे of dollars मार्केट में out नहीं of होगा India. ऐसे ही होना है। Instead, India can invest these saved dollars in its foreign exchange reserves. Increasing the use of the rupee will also slow the currency's depreciation and strengthen it against the US dollar. Tell us in the comments if you think the rupee will be the next major global currency. ऑब्वियसली यार दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और यार आपको ये एक मिनट इसको स्टॉप कर दे यार। ये आपको बता दें कि ये एक ऐसा स्टेप है कि जिससे इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, आपकी डॉलर पे डिपेंडेंस खत्म है, आपको डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इट मींस कि जब जो आप इंपोर्ट करेंगे ना उसके लिए भी पैसा आप क्या करेंगे, अपनी करेंसी में देंगे, करेंसी देंगे और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और ये जो डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं, वो सस्ती होती हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ रुपीज़ का डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सॉरी। तो ये भी ख़त्म होगा इंडिया का। तो इट मीन्स के इंडिया इज स्टेपिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ वेरी मेजर पावर इन द होल रीजन। और सिर्फ रीजन में नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं। आप देखें ना, वो सऊदीया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, रशिया को भी कर रहे हैं, यूएई को भी कर रहे हैं, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है। तो मींस के बहुत बड़ा ग्रुप है कंट्रीज का तीसरा हिस्सा जो है ना वो कैप्चर करने जा रहे हैं। विच इज अगर ये ट्रू है तो इट्स अ वेरी बिग स्टेप। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये तो इंडिया के लिए जो है ना वो टोटली टर्न अराउंड पोजीशन है इकोनॉमी में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और हमें इनकरेज करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें ताकि हम और मज़े की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम आम पाकिस्तानी रिएक्शन फॉर नाउ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।